ओके पुनीत, स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. Yes, sir. तो पुनीत, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Sir, as you know, my name is Puneet Raj. I live in Noida city, which is in Uttar Pradesh state, and I have done integrated dual degree in electrical engineering and M.Tech in power system from Gautam Buddha University, which is a state government university. And I have done my summer industrial training from PGCIL in GIS substation. And apart from this, I my GATE 2022 percentile was 93.2 percentile. And my hobbies include playing outdoor sports like football, volleyball, doing swimming, and I also love to play guitar and sing along with it. Uh, that would be my introduction, sir. Okay. Yes. So you did your summer training in PGCIL GIS substation. Yes, sir. What was the voltage level there? Sir, it was 400 by 220 by 66 kV substation. 400 by 222 kV substation. Yes, sir. Okay. Okay, Puneet. Yes, sir. What do you know about the Oil India? Sir, Oil India Limited is a Navratna PSU under administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Gas, and its chairman and managing director is Dr. Ranjit Rath, who has taken charge from 2nd August 2022, and it is an exploration and production company. It was incorporated in 1959 to explore the oil fields of Naharkatia and Moran, and after 2 years of that, it became joint venture of Government of India and Burma Oil Company Limited UK. And after 20 years of that, it became a wholly Government of India owned enterprise. And about India's 9% of total crude oil production as well as natural gas production is done by Oil India Limited. And not only that, it also produces refined petroleum products and refined petroleum products and LPG as well. And it has a very long experience and expertise in terms of operation and maintenance of oil fields and reservoirs management. And it has about 1157 kilometer long crude oil pipeline spread across in northeastern parts of India, and have about 660 kilometer long product pipeline from Numaligarh refinery to Siliguri. And it has ventured into city gas distribution projects to diversify its non-E&P value chain. And it has also ventured into the renewable energy sector and has commissioned a total of 188.1 megawatt from the renewable energy as of 2021, out of which 174.1 megawatt is from the wind energy and 14 megawatt is from the solar energy. And its Okay, headquarters is in Duliajan, sir, Assam. ठीक है. Puneet, Ji, sir. you Yes. have studied a lot about Oil India. Yes, sir. Sir, Okay, since I desire, it's my desire to work here, so I did my research about it, sir. A bit of my research, sir. good. Yes, sir. Okay, Puneet. What do you think? What is the future of oil industry as we are planning to go for alternative source of energy? क्या लगता है आपको? क्या आपका assessment है about? Sir, about that, I want to say that in our mindset, it is that oil, if we are talking about oil, we are, just like you said, as of energy. So, oil does not have only the use in the scope of fuel, but it has other use as well. For example, in transformers and as lubricating agents, and just now I mentioned other petroleum products, and so hence it has a variety of usage. Though the majority is for fuel purpose, I do agree, but it does not limit to that. So I think if we talk about the alternate energy sources, we are only considering the other sources as a fuel, but not as other things.
for example, I can take the very small example of Vaseline. So Vaseline won't be like diminished all of a sudden. It will be there because it is very required. But if I talk about it as a fuel, it might go obsolete in future, and other sources of energy might come into picture. So, but still, usage of oil won't be diminishing, as it has many other uses other than fuel. So it do have a future, sir, in my perspective. Okay, okay. Yes, sir. Okay, Puneet, हम्म, आपने ये नेट जीरो टारगेट सुना है? क्या है नेट जीरो टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? Yes, sir. Net zero carbon emission target is there. It is to achieve net zero in 2070. As far as I can remember, it was 2070, and up to 2030, we have committed to receive a 70% reduction in the carbon in our atmosphere, Indian atmosphere. Okay. Yes, sir. अच्छा, ये कोई कंट्री है जो अभी कार्बन निगेटिव है? कुछ आइडिया है आपके? Yes, sir. Bhutan is carbon negative country, sir. भूटान. Yes, sir. हम्म. Okay. तो ऑयल सेक्टर में एनर्जी एक अल्टरनेटिव सोर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑयल सेक्टर के लिए, जैसे बायोडीजल, ठीक है ना, जी सर. एंड ग्रीन हाइड्रोजन, Yes, sir. ठीक है. Yes, तो sir. why we called them as a green fuel? Sir, mainly because they do not produce any greenhouse gases, and hence it is clean in a sense that does not produce greenhouse gases. So not polluting the environment, not in a way contributing to global warming. And as well as, sir, green energy in that way as well, because it is non-exhaustive in nature. So it is non-exhaustive, as well as it is not causing any sort of destruction. So तो in that, बायोडीजल से भी आपका ग्रीन हाउस ये कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता? sir, biodiesel is not non-exhaustive. It is exhaustive in nature. It will we have to mine the natural surrounding to achieve that. So it is harmful for the environment in that sense, as we are mining the earth's surface. Okay. What Yes. is your MTech project? Sir, it was green energy transaction assessment on individual customer based on power factor correction coefficient. Green energy. Transaction assessment based on power factor correction coefficient. Okay. Yes, sir. So green energy, what is the relation between the green energy and power factor correction? There Sir, in your in my work, what I did was I added 3 distributed green energy generators to the existing IEEE 30 bus system. So because of that, both the active and reactive power flow got affected, and hence the power factor got changed, due to which the pre-existing method of cost calculation gave the false result. There were a lot of error in that result, and hence a novel approach was used by me, wherein a power factor correction coefficient was defined and incorporated with the existing cost calculation method and the program associated with it, so that the error that we were getting earlier due to the addition of distributed green energy generators, that was eliminated. And it not only saved the trouble of coming up with any new formula as a whole, and engaging lot of human personnel for that. So we saved all that trouble, and the pre-existing program itself could be used to get the exact results. And other than that, it also have many other benefits like power factor correction. Yes, sir.
So you did it on the MATLAB. Yes, sir. It was done on the MATLAB environment. Okay. Yes, sir. So what was the result of power factor before and adding the green energy and after adding the green energy? Sir, the power factor the power factor after the before the green energy was better as compared without the correction. It was better before the addition of the green energy, and when the power factor correction technique was utilized in terms of calculation of cost, it was observed that very significant amount of reduction in the consumer bills were there, as well as the whole power factor of the entire grid becomes better, and the prices. How the consumer bill reduce? Because consumer use as energy as per his requirement. वो तो पहले भी use कर रहा था, बाद में भी use कर रहा है. How their bill get reduced? Sir, it was because of the power factor correction coefficient that we incorporated in the formula. Uh, Hmm. that's how the bill got reduced, and sir, we can understand in such a way that green energy generation cost is lesser than the conventional energy, but when we Or were using. you can add that key we added the green energy and also it improves the voltage profile of the system so that the losses get reduced और losses की वजह से जो energy burden यूजर एंड पे आ रहा था वो कम हो गया है. Yes, sir. तो उसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी का जो बिल रिडक्शन होगा केवल एक ही वजह से हो सकता है कि आपका जो लॉसेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं. Yes, sir. क्योंकि यूजर को तो जितनी एनर्जी चाहिए वो उसको चाहिए ही है. ठीक है ना. Yes, तो sir. Yes, sir. तुम्हारा वो हो गया. ठीक है. चलो पुनीत, नाउ सर विल टेक टेक्निकल, आई विल गिव यू फीडबैक Yes, sir. बाद में. ओके राजीव. हेलो राजीव. Okay. Okay, Puneet. Yes, good evening, sir. Okay, am I audible? Yes, sir. Clearly audible, sir. Okay, turn on your camera. That will be better. Sir, my camera is on, sir. Yeah. So, Puneet, you are comfortable in English or Hindi? Sir, I am comfortable with any of the languages, both of the languages. Okay. So you are applying for All India, right? Yes, sir. Oil India Limited, electrical engineer. Okay, what do you think? What is the nature of the work of electrical engineer? Sir, the electrical engineer in Oil India Limited could be the operation and maintenance of the electrical infrastructure already present. And if in case of oil fields, they have their own setup and the monitoring and control of that particular system, electrical system must be the job role of electrical engineer there, and its protection and monitoring whether it is working, and also, sir, preventive maintenance is done meticulously at all times. This would be. Yes, sir. Okay. Have you heard the term breaker? Yes, sir. What is breaker? Sir, breaker is a device which isolates a system in two parts, and mainly it is done for the purpose of maintenance or in case of any fault condition. Okay, if I adjust the breaker, isolator, and the R switch. Breaker means circuit breaker. Okay. Sir, So if I have can you repeat, sir? if I have to adjust the breaker, isolator, and the circuit breaker in a sequence to maintain any of the equipment, then what will be the proper sequence? Sir, in the sequence of opening the Suppose circuit. if you have to maintain the transformer, or if you have to maintain the motor.
Yes, sir. Any electrical equipment. Yes, sir. Mhm. Okay. Then Sir, it can be, it should be in the sequence that uh, circuit breaker, then isolator, then breaker. okay, and for closing it, Sir, closing just the reverse, sir. Breaker, then isolator, then circuit breaker. whatever the earth switch. Sir, sir, What what, sir? whatever the earth switch. Sir, breaker, then earth switch, then isolator, then circuit breaker. Closing time. First, you have to operate the breaker, right? Yes, sir. Breaker is operated in on-load condition or off-load condition. Sir, it can be operated in both the conditions as per our requirement. An isolator. Isolators are only operated at no load condition. Okay, so in the second case, while closing it, first you apply the breaker. No, sir. While closing it, we first we connect back the earth switch, then the isolator, then the circuit breaker. Okay, right. Yes, sir. Okay, in the case of induction motor, right? Yes, sir. Okay. Have you learned the circle diagram? Yes, sir. Okay. What is the circle diagram and how it is important? Sir, circle diagram is important in that sense as all of the machine parameters and losses can be mainly the losses can be known from the circle diagram itself. Like almost all of the information can be obtained from the circle diagram. What For are example, the parameter that what are the parameter that is being calculated from the circle diagram? sir, like copper losses and uh, sir, no load voltage and current. Okay, so if I say you that if I have the copper loss and core loss, right? Yes, So sir. if the copper loss is more when compared to the core loss, or when the core loss is more when compared to the copper loss, which condition is good? Sir, both copper loss should be less than What is meant to be as a what is meant to be as a copper loss? the copper loss is that loss that is occurring in the conductors due to the current, due to the resistance in the conductor. The losses that is mainly in the form of heat dissipated in the nature. Those are the copper losses. It should be less, sir. Okay. And sir, if we are talking about the best possible condition, then both the losses must be equal. So in that way condition, we get the maximum efficiency. Yes, sir. Okay. What is stepper motor? Sir, a stepper motor is from the family of synchronous machine, and it is that in this motor the input signal is in steps, or impulse input is there, sir. Okay, no problem. Yes, sir. And for the measurement purpose, we are using servo motor, right? Measurement purpose, sir. Yeah, for the measuring for the precise movement. Yes, sir. Movement purpose. Yes, sir. Yes, sir. So what is the basic difference between AC servo motor and DC servo motor? Sir, AC servo motor and DC servo motor. Okay, sir. Sir, main difference, one of the difference is that the supply that we are giving for AC servo motor, the supply is AC, whereas for DC servo motor, the supply is DC. And other difference, sir, I'm not so sure, but I think there is a constructional
Sorry, difference in their construction. I am not able to correctly recall, sir. Okay, no problem. Yes. What are the area of application of hysteresis motor? Hysteresis motor, sir. Not able to recall, sir. Okay. Yes, sir. In the transmission line, right? Yes, sir. Yes, sir. The transmission line. What is the need to calculate the string efficiency? Sir, string efficiency is important because so that the number of insulator disk that we are using can be either reduced or in such a way that insulator puncture does not occur. And How many in case type of, of, okay, how many type of insulator are there? sir, there are many types: string insulator, pin type insulator, suspension insulator, disk. The discs, different discs are there, sir. Okay. Suppose if you are using power electronics equipment in the power system, like in the communication line, to reduce or to improve the efficiency or to improve the communication frequency, right? So in that case, okay, have you okay, let it be. Have you hear the term SCADA? Yes, sir. It What stands is for supervisory control and data acquisition. okay? Where it is used? Sir, SCADA systems are the closed loop systems which are used in industries to monitor the different sensors for Mm-hmm. monitoring and control purpose from one centralized location. The sensors are placed at different locations in the system. And there are many industries where its application can be observed. For example, in power transmission, in telecommunication, in water and waste control industries, Okay, in the etc. transmission line, how we can communicate the communication frequency? Sir, in transmission line, how we can know the frequency of Communicate the communication frequency. Is there any commu- possibility? Sir, there is a one thing called the power line communication, if that's what. Right. Yes, sir. So, sir, power line communication is that where no extra cabling is required. We superimpose the modulated form of the communication signal on our transmission lines itself, and at the receiving Mm-hmm. end we demodulate it and then read the communication signal. So the major advantage is that the no requirement of extra cable is there, sir. Right. Yes, sir. Okay. In in the in the family of thyristor, Yes, sir. right? Yes, sir. In case of SCR, we need the commutative circuit, Yes, sir. right? Yes, In sir. place of SCR, if you are using other family member, then we are not using it. Yes, sir. So why it is so? Sir, because in thyristor there is a for turning off thyristor, we have to give the reverse voltage up to the level that the stored energy or stored charge carriers are removed. But in other cases, it is not, and also the thyristor is the semi-controlled device, that is the only the on state can be controlled. But in case of triac or any fully controlled device, it can be turned off as uh, it can be turned off. Uh, the so Okay, uh, what is zero carrier frequency? zero carrier frequency. Hmm? ZCS or zero carrier switching, zero current switching. Zero current switching is that when the current is crossing the zero It is crossing, switching it is is done. occurring in which case? In So which equipment? zero current switching, uh, sir, no, I'm not able to recall, sir. Switching is occurring in which equipment? Sir, MOSFET switching. MOSFET. Yes, sir.
Is there any possibility that in the circuit breaker zero current switching should be there? Yes, sir. Yes, sir. It should be open when the current is crossing the zero crossing. Okay, last question. Yes, sir. If you got placed in or India, right? What are the Yes, sir. safety norms regarding as if you are a technical officer? Then what Yes, are the sir. safety things you should take into the consideration while carry out the work? You are the field engineer. You will be the field engineer. So what are the safety equipment or safety things you should carry out? Any safety norm have you remember? Sir, as far as I can remember, the safety equipments like safety shoes and proper uniform must be there, like helmet and Any safety any jacket. any safety norm? Sir, norm as in no, sir. Unification. What is meant to be a confined space? Sir, confined space is that region where uh, there is no, sir, I am not able to formulate, like not Okay, able listen, to. listen, listen, Yes, sir. Puneet. Listen, Yes, sir. देखो बाकी तो सारा तुम्हारा ठीक है, ठीक है। Yes, sir. कुछ Yes, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ किए जाते हैं, जैसे मैंने तुमको स्नैप में भी बोला था, सेफ्टी जी सर। नॉर्म के बारे में एक बार पढ़ लेना, ISO 9000 2015 इस टाइप के नॉर्म्स अगर रहेंगे तो इट शुड बी किक योर इंटरव्यू, यस सर। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एक बार सेफ्टी के बारे में इंडस्ट्री में जा रहे हो तो एक बार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है, ठीक है, इसको भी देख लेना। और मोटर के एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन आएंगे मैं क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री में मैक्सिमम मोटर ही यूज की जाती है। एमसीबी एमसीसीबी स्विचिंग अर्थिंग और तुमने सीक्वेंस वाइज एक बार जो तुमने बताया था, ठीक है, शायद पहले बार में कुछ अपोजिट बता दिया था, एक बार उसको चेक कर लिया, मैंने गलत सुना था, ठीक है, एक बार उसको देख सर लेना। वो मेरे और को समझ में नहीं आया था, वो आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो इसलिए मेरे को। ठीक है, ठीक है, जी सर। सेकंड बार में तुमने सही बताया था, बाकी टेक्निकल सही है, कॉन्फिडेंस लेवल भी सही है। थोड़े से मशीन के एप्लीकेशन वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आएंगे। और ये सर्किट ब्रेकर के बारे में अच्छे से जान लेना। जी सर, कोई पर्टिकुलर सर या फिर जनरल? जनरल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एसएफसी सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म क्या है, बाकी तो सारा सही है। ठीक ठीक है है, सर। जी सर। चलो बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक सर। यू। ओके राजीव, थैंक यू। हाँ पुनीत, यस सर। देखो मेरा आपने ना जैसे ऑयल इंडिया के बारे में पूछते हैं तो बहुत सारा चीज पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। जी तो सर। चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर जो है ना हमारा छोटा ही होना चाहिए। तो कुछ चीजें आप बताओ फिर रुक जाओ, ठीक है ना। जी सर। कुछ पॉज लो उसमें, और फिर अगर वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं तब उसमें जाओ, ठीक है ना। जी सर। अगर पूछते हैं तो फिर कंटिन्यू रखो, लेकिन इन कंटिन्यूएशन में सारी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है ओके सर। ना। जैसे आपने मैंने पूछा ऑयल इंडिया के बारे में क्या जानते हो, तो ऑयल इंडिया ये नवरत्ना कंपनी है, ठीक है ना। तो इट इज इन द फील्ड ऑफ क्या बोलते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन है, एंड इन आल्सो द एनर्जी में भी हो गया, विंड उसमें भी हो गया। इनके चेयरमैन का नाम ये है, ठीक है। इतना बोल के रुक गए, ठीक है। फिर अगर वो करते हैं तो फिर आगे आप उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो ये एक चीज पर ध्यान रखना। और ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन के आंसर करना है, ठीक है। अगर आपको जो कुछ लग रहा है किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप अपने आप को रोक सकते हो। सॉरी सर क्या क्या रुक सकते हो, ये सर रिकॉल नहीं कर पा रहा या फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसे करके वो करने हैं। लेकिन आंसर हमेशा उसी चीज का करना जिसमें आप कंफर्म है, ठीक है। या फिर आपको आइडिया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो यू में आज की सर मैं आई ट्राई कि मैं बोल सकता हूँ या कह सकता हूँ ऐसे इसके बारे में, ठीक है। यस सर। अदरवाइज हाँ, बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल के बारे में देख लेना। ये ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीन यस सर। हाइड्रोजन
क्योंकि इसका प्रोडक्शन तो एनर्जी यूज करके ही हो रहा है। अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में आप कोल एनर्जी यूज कर रहे हो या फिर पेट्रोलियम एनर्जी यूज कर रहे हो, तो वहां से आपका पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, तो ग्रीन कैसे होगी? ठीक है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन को तब बोला जाता है जब वो नेचुरल सोर्स से, जैसे विंड पावर से या फिर सोलर एनर्जी से उसको प्रोडक्शन किया जाए, तो वो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ठीक है ना। यस सर। तो वैसे तो इन सब चीजों के बारे में ऐसे इतना डिटेल में नहीं पूछना जाएगा। आप अपना टेक्निकल अपना वो और अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही मेंटेन करके रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें ठीक है। जी सर। ये जो हमेशा ऑपरेशन आप पूछते हैं ना वो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों साइड के आइसोलेटर ऑफ लोड कंडीशन में, यानी कि बिना लोड की कंडीशन में ऑन होने चाहिए। ठीक है। यस तो सर। सर्किट ब्रेकर हमेशा क्लोजिंग के टाइम में सबसे बाद में होता है। ठीक है, जब सर्किट को क्लोज करते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन ऑपरेट कर सकता है लोड पे अपलोड, क्योंकि जब उसको ऑन करेंगे तो वो लोड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ऑफ करते हुए सर्किट ब्रेकर सबसे पहले ऑपरेट करना है। ठीक है ना, सर्किट को, क्योंकि वो ऑन लोड ऑपरेट कर सकता है। यस ठीक है। सर। के बाद फिर हम आइसोलेटर उसको। और अर्थ स्विच क्या होता है? अर्थ स्विच बेसिकली जब हम क्लोज करेंगे उसको, सर्किट को, तो पहले हमें अर्थ स्विच हटाना पड़ेगा पहले। ना मतलब सर ओपन करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर अर्थ में ही आप उसको ऑन कर दोगे तो ग्राउंड हो जाएगा वो सारी सिस्टम। ठीक है ना। हम्म। वो हम्म। आपको रखना है किस टाइप का ऑपरेशन क्या करना है। ठीक है। स्काडा के बारे में आपने सही बताया था, और सब वैसे ठीक है। मिनिस्ट्री के बारे में देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, हु इज आवर पेट्रोलियम मिनिस्टर? पुरी कौन है वो? पुरी साहब है। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? सर हरदीप सिंह, नहीं पता सर। हरदीप सिंह पुरी। हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है। सर आई थिंक इट गॉट चेंज्ड, आई एम नॉट श्योर बट। चेक कर लेना, ठीक है ना, कोई हाँ बात सर, नहीं। मैं देख लूंगा सर। आप स्पोर्ट्स से कुछ खेलते हैं? फुटबॉल, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड कप के बारे में अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। ठीक इसको है सर। जरूर, ठीक है ना, कौन कौन सी कंट्रीज हैं और क्या पार्टिसिपेशन और कहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे एक और चीज हो रही है, जो फुटबॉल ग्राउंड है वो पोर्टेबल फुटबॉल ग्राउंड है। उसको एक प्लेस, पोर्टेबल। हाँ, मतलब एक प्लेस से, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाया सकता है। वहां पे क्या हो रहा है कि कंटेनर में बनाए गए हैं वो चेंजिंग रूम, खिलाड़ियों का वो, ये सब चीजें जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। सर ऐसा कुछ क्यों ऐसा, इसका यूज क्या है सर, ऐसा क्यों करा है? कतर में बेसिकली क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना रहे, वहां कोई फुटबॉल खेलता तो है नहीं। ठीक है ना। ये तो जस्ट एक कंट्री में उसमें कि यहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे, अदरवाइज किसी फुटबॉल प्लेइंग कंट्री में ही होना चाहिए था मैच। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, हाँ। तो ये एक कौन कौन सी टीमें हैं, कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये सब चीजों के बारे में एक बार, लास्ट वाला वर्ल्ड कप किसने जीता था, ठीक है, एक कौन कौन सी मेजर इवेंट्स होती है फुटबॉल में। एक तो वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, यूरोप में होता है, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री में होता है। दोनों के नाम ओके। आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। यस यूरोप, सर। यूरोप में जो होता है उसका क्या नाम है, और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जो होता है उसका क्या नाम है। ठीक है। यस सर। लास्ट यस सर। टाइम वर्ल्ड कप जीता था, लास्ट टाइम? सर पता नहीं सर, मैं देखता नहीं हूँ। देख, लेकिन ये देख लो, ये दो तीन चीजें, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, ये नेट पे मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये दो तीन चीजें आप देख लो, कौन कौन सी कंट्री इस बार खेल रही है फुटबॉल, लास्ट टाइम का फुटबॉल कप किसने जीता था, और यूरोप में कौन सा होता है, और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में कौन सा होता है, साउथ ओके सर। अमेरिका। ठीक है ना। साउथ अमेरिका। ठीक है हाँ। सर। चलिए, गुड लक पुनीत, मेरे हिसाब से ठीक है आपका। अब देखो,
इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है। पहली सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है, चाहे पहले 2-3 क्वेश्चन भी गलत हो जाए, इवन कभी कभी ऐसा होता है कि सारा इंटरव्यू खराब हो जाता है, लेकिन अगर वो आप घबराए नहीं, ठीक है सॉरी सर, जो भी हम मुस्कुरा के जो भी आंसर करा, तो वो पॉजिटिव जाता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं होता सारे क्वेश्चन आंसर कर पाए, ठीक है। जी सर। अच्छा चलो, सर, एक वो पूछा था आपने नेट जीरो एमिशन, वो मैंने सही बताया था? हाँ 2070 का टारगेट है। ऑयल इंडिया का टारगेट भी देख लेना कब है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है हाँ, सर। कंट्री का और टारगेट है। और वो नेट जीरो का मतलब ये है नहीं है कि हम जीरो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन होगा। नेट जीरो का मतलब है कि कार्बन हमारा प्रोडक्शन होगा, लेकिन या तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर वो निगेटिव होगा। जितनी हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं या जितना हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम्म। वो कार्बन निगेटिव कंट्री बनेगी, ठीक है। और सर मैंने भूटान का नहीं, हाँ, वो जो आंसर भूटान, दिया था भूटान ठीक है, वो सही है। करेक्ट है सर? हम्म। और एक ओके। प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट को ना थोड़ा सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करना बताओ, ठीक है ना। ठीक वो है थोड़ा सर। सा, हाँ चेयरमैन या जो भी है, अगर वो प्योर टेक्निकल हुआ तो समझ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देके देखो सर, की जैसे एक मतलब एक ग्रिड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूजर कर हुए हैं, अगर हम उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे क्या बोलते हैं एनर्जी इंट्रोड्यूस ग्रीन जनरेटर्स लगाएं। प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव हो जाता है, जिससे कि लॉसेस कम हो जाते हैं। लॉसेस कम हो जाते हैं तो उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया में जो लॉसेस हो रहे थे वो कम हो गए, तो अल्टीमेटली जो यूजर एंड पे लोड बर्डन पड़ रहा था वो कम हो जाता है, और उससे उनका टैरिफ कम हो जाता है, ठीक है। इस यस सर। तरीके वो कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट पुनीत। यस सर। थैंक यू सर।